Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 4 of the Globalization and Economic Integration. Students, आपने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में तो सुना होगा. आज थोड़ी सी इस पे हम डिस्कशन करते हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान के रेफरेंस से भी हम सुनते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि कहाँ से उसकी IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO का स्टार्ट हुआ, कहाँ से उसका आगाज़ हुआ. तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. ब्रेटन वुड सिस्टम एक मॉनेटरी ऑर्डर है जो 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. The primary aim was to encourage the international economic cooperation, stability and prosperity by promoting exchange rate stability and free trade. Students, issue वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये था कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, एक्सचेंज रेट के इश्यूज थे कि कंट्रीज इसके लिए ये इशू था कि एक्सचेंज रेट को अपनी इकोनॉमी का कैसे, अपनी करेंसी का कैसे फिक्स किया जाए. स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी के इश्यूज थे, इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट्स थे. So at the end of the World War II, the United States had a huge surplus in the balance of trade. Exports of the military equipment and consumer goods to allied powers grew the American economy toward recovery from the Great Depression. A severe financial crisis sparked by a 1929 stock market crash in New York that led to the bank closures and high unemployment. इसी दौरान जो यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड था तो सरप्लस में था क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. सेकंड वर्ल्ड वॉर का तो आपको पता है कि यूएस मिलिट्री बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसके जो इक्विपमेंट है तो एक बड़ी इंडस्ट्री है इनकी. तो चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनका जो वेपन्स वगैरह है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, बहुत ज़्यादा सेल हुए थे. इसी वजह से उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था तो वो सरप्लस में था. The US was aware of its military capabilities and advantageous economic position, especially in relation to destroyed Europe and Japan. The US took a leading role in increasing the post-war international order, an order that was expected to maintain peace and prosperity in the world. अब US खुद तो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसको यूरोप और जापान का जो डिस्ट्रक्शन था तो वो नज़र आ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. उसकी ये कोशिश थी कि एक ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो उसको बनाया जाए कि जिसमें दुनिया में पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को तबाह करके रख दिया था. मेन जो रोल था इसमें यूएस और यूके का था पोस्ट वॉर पीरियड में, जिन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एफर्ट्स किए. One of these meetings took place in July 1944 in Bretton Woods and became to known as the Bretton Woods Conference. फिर इसमें एक ब्रेक थ्रू 1944 में आया. जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जिसको लीड कर रहे थे यूके और यूएसए, और फिर उसके साथ 42 दूसरी जो नेशंस हैं, एलाइड नेशंस हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें थे. मीन्स टोटली 44 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेजर जो रोल था वो यूके और यूएसए का था. Still, the participation of these 44 states was only relevant to the extent that they supported either the American or British side. सिर्फ उसमें ये था कि 44 कंट्रीज तो थे, लेकिन वो उन दोनों को, उनमें से एक के व्यूज़ को, अमेरिकन या ब्रिटिश के व्यूज़ को सपोर्ट करना था. During the conference, the US and British delegations presented proposals for the establishment of world economic system. The US wanted to create an international order that was strong enough to promote international economic stability. इशू ये था कि चूँकि पूरी दुनिया 1929 और 1930 का ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं कि जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बिल्कुल हिला के रख दिया था, जिससे
جو کلاسیکل تھیوری تھی مکمل طور پہ فیل ہو گئی تھی، تو دنیا نہیں چاہتی تھی کہ اس قسم کا جو ہے کوئی سانحہ ہو. اس میں یو ایس کا ایک میجر ایم یہی تھا کہ اس قسم کے جو کرائسس ہے اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. Their main objective was to avoid another crisis like 1920, that of 1929. The Great Britain proposal was more focused on reconstruction, but the British had difficulty in bringing support. In the end, the US proposal was prevailed with compromises. As a result, the Bretton Woods system reflected the US concern in the post-war II period. تو یو ایس اور یو این میں یہ جو ڈسکشن ہے یہ چلتی رہی اور پھر برٹن ووڈ سسٹم اسٹیبلش ہوا جس میں ورلڈ وار ٹو کے جو کنسرنس تھے تو اس کو ریموو کرنا تھا. The US accepted the British suggestion that the government should stimulate their economies and promote international trade without a competitive currency devaluation. یو ایس اور یو اے اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ تمام گورنمنٹس کو اسٹیپ لینے چاہیے فری ٹریڈ کے لیے اور اس طرح کی کوئی کرنسی ڈیویلیویشن نہیں کرنی چاہیے. According to British dedication, if the state followed this prescription, the economy would be in balance and future crises like 1929 would be averted. یو کے کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فری ٹریڈ کو ڈیولپ کریں تو پھر اس قسم کی جو کرائسس ہے 1929 کے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. Now question arises, what were the primary principles upon which the Bretton Woods system was based? تو جو پرنسپلس پہ یہ ایگری ہو گئے تھے برٹن ووڈس کنٹریز کے تو اس میں فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم تھا، ڈالر گولڈ اسٹینڈرڈ تھا اور اوپن مارکیٹ کے متعلق ڈیسیجن تھے. سو کنٹریز ایگری ٹو مینٹین دیئر کرنسیز ایٹ فکس ایکسچینج. اس پہ تو سارے ایگری ہو گئے کہ ہم فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کو ہم امپوز کریں گے. Dollar gold standard, the US dollar was pegged to gold at the rate of 35 ounce per rate of $35 per ounce, and other currencies were pegged to the US dollar. US dollar کو جو ہے وہ لنک کیا گیا، اٹیچ کیا گیا گولڈ کے ساتھ اس $35 پر اونس کے ریٹ کے ساتھ، جبکہ دوسری کنٹریز کی جو کرنسی تھی تو اس کو US ڈالر کے ساتھ لنک کیا گیا. The system prioritized free trade over protectionism, and this principle was engineered through the General Agreement on Trade and Tariff, which later on evolved into World Trade Organization (WTO). پھر فری ٹریڈ کے لیے نیگوسیشنز چلتے رہے اور اس سے گیٹ اسٹیبلش ہوا جو لیٹر آن WTO بنا. In the end, the Bretton Woods Conference created two international financial institutions, the IMF and the International Bank for the Reconstruction and Development, which became known as the World Bank. تو اسٹوڈنٹس مین جو اس کا رزلٹ تھا ان پرنسپل پر بیس کرنے کے بعد ٹو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے تھے، دو انسٹیٹیوشن بن گئے تھے. ایک IMF تھا اور دوسرا IBRD تھا جس کو بعد میں ورلڈ بینک بعد میں ورلڈ بینک میں کنورٹ ہوا. These two institutions were based on the belief that the global collective action was necessary to guarantee international economic stability and rebuild Europe. During the conference, there were attempts to create a third institution to promote and regulate the trade. Students, یہ دو انسٹیٹیوشن IMF اور IBRD یا ورلڈ بینک یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا اس کانفرنس میں کہ یہ اسٹیبلش کیے جائیں گے، لیکن ورلڈ ٹریڈ کو بھی تو لبرلائز کرنا تھا. ورلڈ ٹریڈ کو جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ٹریڈ بیریئرز تھے یا نان ٹیرف بیریئرز تھے تو اس کو بھی ریموو کرنا تھا. تو اس پیپر ڈسکشنز جو ہے وہ جاری رہی اور لیکن یہ کہ تھرڈ انسٹیٹیوشن تو نہ بن سکا. لیکن ایز اے ریزلٹ آف دس ڈسکشن 1949 میں جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف جو ہے وہ سائن کیا گیا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گیٹ ہے لیٹر آن اٹ گیو برتھ ٹو دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور WTO. اب IMF کا کیا کام ہے، ورلڈ بینک کا کیا کام ہے، WTO کا کیا کام ہے اور یہ اسٹیبلش کیسے ہوئے؟ بیس تو اس کا برٹن ووڈ کانفرنس تھا
لیکن ان کا کیا کیا رول ہے ورلڈ اکانومی میں گلوبلائزیشن میں we will discuss it in the coming lectures. So thank you very much for sparing time. See you in the next lecture inshallah. Tribes, chieftains, states, and empires have been governed predominantly by a small elite of people making